Okay, so today we will be taking up the problems. किसी को किसी टॉपिक को कुछ समझ में नहीं आया है या फिर कोई अगर टॉपिक है जिसका आप चाहते हैं कि फिर से डिस्कस हो जाए, उस पर बात होती है. सो यू ऑल रिमेंबर द रूल्स. रेज योर हैंड यूजिंग द रेज योर हैंड फीचर ऑफ टीम्स ऐप और फिर हम लोग प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे. रेपिटेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछना. एक स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आप 10 मिनट बाद कहीं से आ रहे हो सेम क्वेश्चन. इधर अटेंड द क्लासेस प्रॉपर्ली और डोंट अटेंड. ठीक है, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग मत पूछ लें. जेन्युइन प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर. यस मुशाबा. Which one? Diaphragm. Yes, so we have a question here from Mushaba 7th C. 7th A. ये डायाफ्राम समझना चाह रही है. सो रिमेंबर दैट एक्सपेरिमेंट मुशाबा जिसमें एक जार के अंदर 2 बलून्स थे, उसका बेस हटाया गया था, फिर वहां पे एक रबर का मेम्ब्रेन टाइप का लगाया गया था जिससे हम खींच रहे थे तो वो क्या हो रहा था, बलून्स इन्फ्लेट हो रहे थे. वो वीडियो दिखाया था, देखा था ना सब. ठीक है, तो हमारे लंग्स में भी कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट होता है. जैसे उस जार के बेस पे वो जो मेम्ब्रेन हमने स्ट्रेचेबल लगाई थी, वैसे ही हमारी जो रिब्स है उसके नीचे डायाफ्राम की अरेंजमेंट होती है. ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट उसी मेम्ब्रेन की ही तरह काम करता है. इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ. ठीक है, इसकी वर्किंग के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट. So what exactly is a diaphragm? It's inside your chest cavity, the diaphragm works to help your breathing. When it contracts, air fills into your lungs. दिखा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके लंग्स का पोर्शन हो गया, ऊपर वाला जो 2 लोब्स हैं. ठीक है, दीज 2 लंग्स, ये पाइप हो गई जिससे कि ब्रीथ इन एयर आती है. क्या कहते हैं इसे, व्हाट डिड वी कॉल इट, ट्रैकिया. ट्रैकिया से कहाँ आती है, ब्रोंकाई. तो ये जो बड़ी वाली लाइन है इन्हें आप कह सकते हैं ब्रोंकाई. फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद जो बहुत धागे के जैसे के जैसे जो बाइफर्केशन है उन्हें एल्वियोलाई है. ठीक है, तो अल्टीमेटली हेल्प कैसे हो रहा है, दिस पोर्शन, दिस इज व्हाट वी कॉल डायफ्राम. ऑलराइट, ये वीडियो हम पूरा देखेंगे. स्क्रीन शेयर वीडियो. When the diaphragm relaxes, it expands and forces the air out. This is how we breathe. Sometimes this invaluable muscle can become weak or even paralyzed. Its lack of function can cause difficulty breathing, sleeping, fatigue, and even recurrent pneumonia. Your lungs might also have difficulty with adequate gas exchange since they're inhaling and exhaling inefficiently. Weak or paralyzed diaphragms are rarely caused by an injury to the diaphragm itself. See, the diaphragm connects to the nervous system through the phrenic nerve. When this nerve is damaged or under pressure, the signal to the diaphragm weakens, triggering only part of the muscle, if anything at all. Diaphragms are rarely caused by an injury to the diaphragm itself. See, the diaphragm connects to the nervous system through the phrenic nerve. इसको सब लोग नोट कर लेंगे जस्ट फॉर जनरल नॉलेज पर्पसेस. क्या कि द डायफ्राम इज कनेक्टेड टू द ब्रेन. कौन सी नर्व कनेक्ट करती है, फ्रेनिक, PHRENIC, फ्रेनिक नर्व.
PHRENIC, phrenic nerve. ठीक है? When this nerve is damaged or under pressure, the signal to the diaphragm weakens, triggering only part of the muscle, if anything at all. Luckily, imaging such as X-rays, MRIs, and ultrasounds help doctors diagnose diaphragmatic weakness and paralysis. Other times, blood tests can diagnose the issue by revealing a lack of oxygen in the bloodstream. Treatment depends on the severity of the diagnosis. Surgery remains the most effective way to treat a paralyzed or weakened diaphragm, but some doctors may recommend non-surgical options as well. If left untreated, a weak or paralyzed diaphragm can cause breathing issues that worsen over time. If you've been diagnosed with a diaphragmatic issue, visit our इसमें और बेटर समझ में आ जाएगा. The primary muscle of respiration is the diaphragm. The diaphragm is a thin, dome-shaped layer of muscle and tendon that अब इसमें प्रॉपर आप लोग देख सकते हैं रिब केज के ये जो बेस है इसी के नीचे आपका क्या होता है, स्टमक होता है. ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, दिस इज योर डायफ्राम. ठीक, that separates the abdominal cavity from the chest cavity. It gains its shape from its attachments and from the organs that surround it, especially the heart, lungs, and liver. The diaphragm attaches at the costals along the lower rib cage, behind the front of the sternum, and deeper in the back along the spine. The diaphragm also attaches to itself by a central tendon, making the diaphragm one of the unique muscles of the body. The diaphragm uses its central tendon. अब कल एक क्वेश्चन था कि रिब्स मूव करती हैं कि नहीं करती. ठीक है, उस पर बात चल रही थी. तो ये हो रहा था कि रिब्स तो बोन्स की हैं बट मूव कैसे करें. तो क्या यहाँ पे कुछ लाइंस दिख रहे हैं? तो क्या ये मूवमेंट ऑफ रिब्स को पॉसिबल करेंगे? ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि जब हम इनहेल करते हैं तो रिब्स कहाँ जाती हैं, मूव करती हैं. ठीक है, और जब एक्सहेल करते हैं तब ठीक है. अब दिख गया सबको. ठीक, And its attachments is leveraged to flatten during inhalation. The expansion of the ribs comes from the resistance of the internal organs to downward movement. As the internal organs are slow to move, the ribs expand to make room for the lungs. While the diaphragm attaches at the bottom of the ribs, its range of motion never reaches that low in the body. As seen from below, we get a sense of the full range of motion of the diaphragm as it would glide over the aorta, the vena cava, the esophagus, and the internal organs. For more information, visit www. ठीक है. सो दैट्स इट मुशाबा. आई होप योर डाउट गॉट क्लियर. लेट अस टेक अस द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स. ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, रेज योर हैंड. अर्पिता. No, sir, I have no doubt. I have to ask a question. Sir, in this chapter, sir, we have to make any of diagram. अगर क्वेश्चन में कहा गया तो बनाना है, अदरवाइज नो. Thank you, sir. योगेश. सर कॉकरोच के जो सर स्पैक्ट्रल्स होते हैं सर वो पूरी बॉडी में सर होल्स होते हैं या फिर सर सिर्फ एक ही लेयर जैसे हम लोग सिर्फ नॉस्टल कैविटी में होते हैं. ठीक है, इसको भी देखते हैं.
have you ever thought what will happen if a cockroach gets trapped in a glass jar? Exactly. After some time, it will die as it cannot breathe in oxygen. What will happen if you make a small hole in the glass jar? Well, in this scenario, cockroach will be able to breathe and can survive inside the jar. Like all insects, cockroach breathes via tracheal system. Let us dive deep into the detailed study about the respiratory system of cockroach. Respiratory system of cockroach consists of spiracles, trachea and tracheoles. Spiracles are the small openings present at the surface of its body. There are 10 pairs of spiracles which are located at the pleura of the thoracic and the abdominal segments. These openings are regulated by muscular sphincters. The trachea is the tube-like structure about 1 millimeter thick in diameter that penetrates deep into the tissues and forms a dense network known as tracheal system. The trachea is further divided into thinner tube called tracheoles. Tracheoles contain a network of fluids which flows throughout the cockroach's body. Let us know how gaseous exchange takes place in cockroach. The oxygen-rich air enters into the cockroach's body by diffusion through the spiracles and then opens into the tracheal tubes, which get diffused into the different body cells and tissues. Similarly, the carbon dioxide is expelled out by diffusion from the body through the spiracles. It is interesting to know a cockroach can live without its head for a week, as it does not have a specialized blood vessel system like humans and does not bleed as it contains hemolymph, a colorless fluid. ठीक, समझ में आया कैसे स्पाइरेकल्स के बाद जो ट्रैकियल सिस्टम है वो कॉकरोच की बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और CO2 को क्या करता है, एक्सहेल करता है, बाहर करता है। और एक बात और आपने समझी कि इसके बॉडी में ब्लड नहीं होता, क्या होता है, हीमोलिम्फ, कलरलेस लिक्विड। ठीक है, नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्गेश, क्लियर हो गया? यस सर, मैं डाउट क्लियर हूँ। ठीक है, नेक्स्ट विवेक। आवाज धीमे आ रही है। सर हमारे दोनों लंग्स सर सेम दिखते हैं। दोनों लंग्स सेम? एक्चुअल में तो मैंने भी नहीं देखा, बट हाँ जो भी डायग्राम वगैरह है उस हिसाब से तो सेम ही नजर आता है। ये बेटर तुम्हें इसका कोई बायोलॉजी का टीचर बता पाएगा थोड़ा डिटेल में, या फिर समबडी हु इज डूइंग एन MBBS, जो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एनाटॉमी। तो उसमें क्या होता है कि हर बॉडी पार्ट का इन डिटेल स्टडी, किसी डेड बॉडी से वो लंग्स निकाल के या उसके किसी मॉडल से दे टीच यू वेरी थरली। वो विवेक तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यशमित, colorless liquid. कलरलेस मतलब वाइट है? Yes, sir. So, sir, when we kill an insect, that also has hemolymph. जरूरी नहीं है सब में हो, बट ये भी जरूरी नहीं है कि सब में ब्लड ही हो। यू सी, सारे इंसेक्ट्स को किल करने पे रेड ब्लड नहीं दिखता या ब्लू ब्लड नहीं दिखता, तो मतलब उनमें कोई और पार्टिकल नहीं। वाई डज द ब्लड अपीयर टू बी रेड? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन आयन्स इन इट, फेरिक आयन्स इन इट। ठीक है, किसी का ब्लड ब्लू है तो वो क्या होगा, कॉपर के आयन्स होंगे। अब जैसे लोहा या आयरन जब आप देखते हैं तो वो आपको कुछ डार्क ग्रे कलर का दिखता है, दैट इज अ मेटल। अभी हायर लेवल केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसमें आयन फॉर्म होते हैं। एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं। तो जब एक या दो इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकलते हैं
तो फिर वो आयन के फॉर्म में आ जाता है। तो मेटल का कलर भले डिफरेंट हो बट आयन का डिफरेंट होता है। जैसे कॉपर क्या है, रेडिश ब्राउन है बट उसके आयन का कलर एकदम ब्लू है, रॉयल ब्लू, ठीक है। इसी तरह से आयरन में तो होते हैं, फेरिक होता है, फेरस होता है। वन हैज अ रेड कलर एंड दी अदर वन हैज अ ग्रीन कलर, ठीक। और कॉपर हो गया, ये हो गया इनका। बाकी मैग्नीशियम इज समवॉट वाइट, कैल्शियम अगेन इज वाइट। यस, यू हैव अ वाटर है, ठीक है। तो ये है उसका, इसीलिए ब्लड में कलर आ जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। हीमोलिम्फ का क्या है, दैट आई ऑल्सो डोंट नो इन डिटेल, बट यशमित इसमें यही कह सकते हैं कि जिसमें आपको रेड ब्लड नहीं दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी हीमोलिम्फ के प्रेजेंस की ही ज्यादा है, ठीक है। ओके सर। अब क्लास में क्वेश्चंस। यस रुद्र, हाउ डू, किसमें, प्लांट्स में, स्टोमेटा से देखते हैं, इसको भी देखते हैं। So Rudra has asked us a question कि प्लांट्स की रूट्स में ऑक्सीजन कैसे पहुंचे। Respiration in plants. Respiration is an inevitable process in all living organisms. Plants take in oxygen and give out carbon dioxide during respiration, taking place in the night. The surfaces of the leaves have tiny pores called the stomata. Stomata are small openings which can close and open easily to aid in exchange of gases. The opening and closure mechanism of stomata is brought about by guard cells around the opening. Oxygen is required to break down starch in the cells. Starch is a form of sugar which gets converted into carbon dioxide and water in the presence of oxygen with release of energy. Roots under the soil also respire in order to obtain oxygen. Oxygen present in the small spaces between soil particles diffuses into the root, and carbon dioxide diffuses into the soil. The energy released during the process of respiration is utilized for different processes like absorption and transportation of water and mineral nutrients from the soil into the plant. Aquatic plants can obtain the dissolved oxygen present in water. Gaseous exchange in these plants takes place through leaves, stems, and roots. Activity. Children, let us prove the process of respiration in plants. Take a small conical flask. Add some amount of soil and a small plant. Fill 1/4 of the flask with water. Close it with two-hole rubber cork. Insert a funnel made up of glass rod and a drop of rubber. Through another hole, insert a glass tube into the flask. Connect this glass tube to a test tube with lime water. Keep it in complete darkness. After an hour, we shall try to add water through funnel.
At one point, we can observe that lime water in the test tube turns milky. This proves the fact that plants take in oxygen from water and release carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये किस चैप्टर में पढ़ा था हमने? चैप्टर 6 में, बिल्कुल सही। बट इस वीडियो में रुद्र के क्वेश्चन का आंसर नहीं था। Hi friends, welcome back to my channel Scientific House. Today's topic is how roots breathe. So watch till end. Roots of the plants take oxygen from air that is present in between of particles of the soil. कहाँ से मिल रही है? पार्टिकल्स ऑफ सॉइल के बीच में जो जगह है उसमें जो एयर है, उस एयर के जो ऑक्सीजन का पोर्शन है ये उससे इनहेल कर रहा है। ठीक है। अब व्हेन आई वाज टीचिंग द चैप्टर लास्ट टाइम आई हैड डिस्कस ना कि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर घर में आपके गार्डनिंग होता है तो वो मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर के खोद दिया जाता है एट रेगुलर इंटरवल्स। उसको जैसे कि गोड़ाई कर दिया है, या फिर टिलिंग ऑफ द फील्ड आपने देखा होगा कि एक फसल के बाद दे सिंपली डिग द सॉइल एंड लीव इट फैलो कि एयर आ जाए उसमें, बिकॉज दे नो कि रूट्स ब्रीथ कैसे करेंगे। एयर डिजॉल्व इन द सॉइल उससे, या फिर कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिनको जब सफिशिएंट एयर नहीं मिल पाती है, देयर रूट्स गो डीप लाइक द बैरियन ट्री, तो आप देखते हो ना उनके ब्रांचेस से रूट्स लटकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, दे हेल्प दैट ट्री फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ठीक, Root hairs, which is an extension of the epidermal cells of a root, is in direct contact with the soil. Oxygen diffuses in root hairs and reaches other cells of the root. ठीक है, इसने जो पॉइंट्स बताए, एटलीस्ट कोई एनिमेशन हमें देखने को नहीं मिला, बट जो पॉइंट्स बताए इसमें वो वैलिड थे, हमें अपने काम की बात पता लगी। ठीक है, द फाइबर्स ऑफ रूट्स वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो एयर है उससे अपने काम की ऑक्सीजन ले लेते। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य। Yes, sir. Sir, I am told that the fish also breathe in underwater. But sir, how? गिल्स, गिल्स का प्रोसेस भी है, देखना है। ओके, लेट्स सी। How do fish breathe? Through gills. Okay, so we've only got the head of this fish, but we'll be able to see its gills. Yeah, so okay, so they are the gills. What do you notice about them? What do you notice about those gills? They look About the colour. Tell me about the colour. They look weird, yeah? deep red. Deep red. What makes them red, you reckon? What? Yeah, blood. So these gills have lots and lots of blood vessels in them. Okay, lots of capillaries. Capillaries are super small. I reckon it might be, doesn't matter the colour.
Okay, so this is how fish breathe. So, what else could you describe about these gills? What else would you say? They look a bit tentacle because they Yeah. have lots of different strands. Lots of different strands. Why do you think they've got lots of different strands? For the air to come in. Yeah, absolutely. We say it's got a large surface area. So lots and lots of, well, it's about having lots and lots of surface. So lots and lots of capillaries are in contact. Now watching this video must be a bit difficult for some people, especially those who are vegetarians. थोड़ा अजीब लग रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को नहीं देखते, नहीं किसी को वॉमिटिंग हो गई तो प्रॉब्लम होगी। बट गिल्स कैसी दिखती है फिश में, एटलीस्ट ये तो सबने देख लिया। वेजिटेरियन जो है अब उन लोगों ने नहीं देख रखा है, तो ये चीजें एनिमेशन में ही बेटर है, रियल में देखना थोड़ा कठिन है। Good won't be able to breathe outside water. Why, Tia? If we can breathe outside water, then why can't fish do that too? That's because we have lungs to breathe. What we breathe is oxygen, and when it enters the windpipe, it goes straight to the lungs. The lungs help us to breathe in air. Fish don't have lungs? No, Tofu. Fish don't have lungs. They have gills. What are gills? They are similar to our lungs. Behind its mouth, they have holes just like our nose. Fish breathe by taking in oxygen from the water it drinks. The gills separate the oxygen present in the water and throw out the water and the carbon dioxide. So are you trying to say that we have lungs and they have gills to breathe? Yes. Then I can breathe underwater too. No, Tofu, you can't. You need a snorkeling pipe to make you breathe underwater. गिल्स की फंक्शनिंग कुछ हद तक बहुत सिंपली इसमें बताया गया, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ डिटेल्ड वन। If you want to achieve better results, make a great impression, and save time at work, you should get Grammar. Water contains oxygen dissolved in it. Depending on temperature and other factors, the level of dissolved oxygen in water is about 4 to 15 milligrams per liter. Fish extract this dissolved oxygen from the surrounding water by a process called aquatic respiration. Fish have specialized structures called gills to carry out exchange of gases with water. The gills are located on either side of the head of fish, behind the mouth cavity. In bony fish, the gills are covered by a hard, bony flap called the operculum. It is also known as gill cover. In cartilaginous fish, the operculum is lacking and the individual openings to gills are called gill slits. During the process of exchange of gases, a fish first gulps water through its mouth. At the time of the intake of water, the mouth opens while the operculum remains closed. The fish then closes its mouth and opens the operculum to force the water out through the gills. The color of the gills is dark red or brown red because of the presence of a large number of blood capillaries in it. These capillaries come in close contact with the current of water crossing the gills.
Blood absorbs the dissolved oxygen from the water by diffusion. The unique structure of the gills ensures that they absorb most of the oxygen dissolved in the water that is passing between them. Simultaneously, carbon dioxide from the blood diffuses out of the gill capillaries into the water. The water containing carbon dioxide is expelled through the open operculum. Besides being the respiratory organs, the gills also play an important role in maintaining the balance of salts in fish. Fishes like bluegill, seahorse, lionfish, Atlantic cod possess the hard cover of operculum. The best example of a fish having no operculum is shark. All the species of shark lack operculum and have only gill slits. ठीक है, so this was the explanation more or less of how the gills work. ठीक है, अब यहाँ पे this marks the end of the first chapter. Complete the exercises properly in your notebook. और नेक्स्ट टर्म पे जब भी आपका स्कूल आने का होगा गेट देम करेक्टेड. ठीक है. Okay, sir. Thank you, sir. Yes. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. सर अगर इसको हाफ बाहर लैंड